because we are going to calculate the refractive index, so there is an other formula to calculate the refractive index, which is with the help of speed of light, right? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो अगर आपको वैल्यू याद हो. Yes, sir. Yes. 3 times 10 to the power 8. Very good. So that is the speed of light. And is there any effect on speed of light while passing through any dense material? अगर किसी No. medium से पास होगा तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस आएगा? No. Because light is going to be bent, and due to that bend, light may take some time to reach at the ending or the destination point. तो कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आ सकता है या नहीं? Sir, I think speed of light stays same. Yes, speed of light remains same, but when it passes through any medium, so in that medium, let's suppose we discuss about the examples of refractive index in water or in glass, and we discuss about the concept of real depth and apparent depth. So according to that situation, जिसकी वजह से आप क्या होगे कि लाइट जब बेंड होगी तो उसको अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट? Okay. So that makes some difference in the speed of light, not very much greater difference, but very minor difference in the speed of light. So you can calculate refractive index with also the reference of speed of light, which is equals to n is equals to p over v. P is the speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum. स्पीड ऑफ लाइट के फिगर्स चेंज नहीं होंगे, वो अपनी जगह पर कांस्टेंट रहते हैं हमेशा, लेकिन वहां पर बेंड होने की वजह से, बिकॉज अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल को जिस तरह पढ़ा हो, डिस्टेंस इज द पाथ, लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. अब आप रैंडम किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर लो, ठीक है, आपने अपने घर से अपने स्कूल तक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आपकी चॉइस, आप किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन वहां पर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पाथ यू चूज टू ट्रैवल. और एज कंपेयर टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? तो सेम Yes. यहाँ पर इस फॉर्म में आएगा कि हमारा डिस्टेंस चेंज हो गया, राइट? तो दैट्स व्हाई स्पीड इज गोइंग टू बी low in medium as compared to that of medium, but the figure or the actual value of light, speed of light will remain same, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So speed of light in medium. So these are three formulas to calculate the refractive index of any medium. Depending upon the condition of our question, we can use formula according to our situation, right? मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक? No. ओके. सो ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस कर लिया. दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आफ्टर in our next class or after this class we will solve the question related to this chapter live. Okay. Okay. Okay, now we are discussing about uh, the transparent objects, which is water and glass. So is it possible for a light to reflect through glass and water? That light will completely reflect in glass medium or water medium. Is it possible for light or not? Yes. Okay, any example? No. No. It means that light will always refract or bend when passing through glass or medium, right?
but I'm not sure. okay, but it is possible for a light that light can reflect through any dense material which is made up of glass or water. Okay, and how is it possible? हम एक वीडियो में इसकी ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं कि रियल आपके पास ये फॉलो किस तरह से हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये लैंप देखा होगा नॉर्मली, तो इस लैंप में जो लाइट होती है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो रही होती है, राइट? वीडियो विजिबल है? Sir, I can't hear anything. ओके, मैंने साउंड म्यूट किया है क्योंकि हमने बस यहाँ पे लाइट के फिनोमिना को देखना है। ठीक है, अब आप यहाँ Okay. पर ऑब्जर्व करो, तो देयर इज अ लेजर लाइट विच इज पासिंग थ्रू अ ग्लास मीडियम, राइट? And you can see that light is only reflecting into the glass medium, right? और प्रीवियस जो हमने Yes. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ग्लास है वो डेंस मीडियम है, राइट? दिस इज द डेंस मीडियम, और लाइट इज पासिंग फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम. Area outside the glass is the rare medium, right? So when light is passing from dense to rare, so what will be the direction of light? Towards normal or away normal? Away from normal? Away from normal. So actually light is going to be travel somewhere in this direction, away from normal. This is the refracted ray. But in this example or this practical example, we observe that light is completely reflecting within the same medium, right? There is no refraction involved in this situation. So how is it possible that light can also reflect into the dense medium? If we observe this example or this phenomena in some other medium which are not regular in shape or regular in surface, यहाँ चलो हमारे पास नॉर्मल ग्लास था, एक रेगुलर शेप थी, तो लाइट चलो हम कंसिडर कर सकते हैं कि रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन अगर सरफेस हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में हो, सेकंड मीडियम में हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप में है, और यहाँ पर भी आप देखो कि लाइट एक एंड से पास होकर जो उसका एंडिंग पॉइंट है वहां पर आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रही है, राइट? Yes. It means that light is reflecting complete into the surface of that medium. और इसकी जो डेली लाइफ की एग्जांपल हम डिस्कस करें अगर, तो हमारे जो लैब्स में और जो हमारे राउटर्स में इंटरनेट केबल यूज होती है, डेट इज मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, राइट? ग्लास प्लास्टिक टाइप मटेरियल, और जब उसमें से लाइट पास होती है वहां पर, so light is completely reflecting into that surface, right? वहां पर हमारे पास बेंडिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पर लाइट जो है वो completely रिफ्लेक्ट हो रही होती है थ्रू वन एंड टू एन अदर एंड, राइट? So this is the example of optical Yes. fiber now. You can see that there is a dark cable, black color cable, and light is passing from one end to the other end of the wire, right? Because this light is not reflecting, so you cannot observe light onto the other end of the wire, right? आप दूसरे एंड पे लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका मतलब है लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होते हुए कंटिन्यू कर रही है अपने पाथ को टूवर्ड्स द एंड ऑफ दैट पॉइंट, राइट? So, and this lamp is also the example of reflection of light in the dense medium or in the fiber. ये लैंप हमने डेली लाइफ में हमारे कहीं ना कहीं हमने वरना रूम्स में सेट किए होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेंटर में सोर्स ऑफ लाइट होगा, और सिंगल फाइबर पे आपको जो है वो स्पार्क की फॉर्म में लाइट नजर आ रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू डेंस मीडियम, राइट? Yes. और अगर मैं आपको इसका फिनोमिना दिखाऊं, हम ऑन बोर्ड तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं अगर आपको इसको पहले प्रैक्टिकली दिखाऊं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा एंगल को कंसिडर करना।
कि एक्चुअली ये पॉसिबल किस तरह से हो सकता है, इसकी रियल डेमोन्स्ट्रेशन भी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, इफ वी डिस्कस with the help of another example. तो अब यहाँ पर आपको कौन सा मीडियम दिख रहा है? Dense? Yes, dense medium, which is made up of glass. And for your simplicity, there also on paper there is also an angle mentioned there, so we can also identify the angles from the ray of light. This is the example when light is passing straight through the medium, so light will also go straight after passing through it. There is no refraction, right? And if we increase Yes. the angle, so you can see that light is going to be bent. Yes, at this point, light is passing with the angle of 10 degree as compared to the normal, right? And what will be the angle of refraction? You can see on the upper side, which is greater than the 10 degrees, right? Y- Actually, this is our now angle of incidence, and this is the angle which is mentioned there. So angle of incidence is equals to 10 in this situation, and you can see on the upper side that this is 20 and this is 20, and light is somewhere in between them, which means that the angle of refraction is now greater than the angle of incidence, and angle is going to be somewhere around roughly 14 or 15 degrees, right? Which means that light is going to be refracted when passing through the different surface or different medium, right? Yes. And now if we continue to increase the angle, so what will happen? Let's see in this video. As we increase the angle, so light will also going to be refract with greater angle, right? You can see that our incident angle is between 20 and 30, and light is going to be refracted between 40 and 50. Now you can see that some of light is going to be reflect through the surface, right? इस पॉइंट पर आपको कुछ लाइट रे नजर आ रही है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, right? Now partially reflection and partially refraction, right? Yes. So you can see that light is now partially reflecting and partially refracting after passing through the medium, depends upon certain angle, right? And if we continue to increase the angle of incidence, so you can see that now light is completely reflecting from that medium, right? Yes. So this is the phenomena of total internal reflection. Total internal reflection means when light is passing from dense to rare medium, so light will completely reflect or bounce back into the same medium after passing through some dense medium to rare one, right? Any confusion? No. Or if you continue to increase the angle, at this point you can see that light is partially refracting and reflecting, and there is also a point where light is bending at 90 degrees, right? At this point light is also close to the 90-degree angle, and after that 90-degree light is going to be completely reflect. So this is the phenomena of total internal reflection. Now discuss about the components that how this total internal reflection is going to be possible.
according to our topics we already discussed. So after refractive index, there is a topic of total internal reflection. So after watching the video, we can observe that it is possible for a light to completely reflect after passing through dense medium. The topic is total internal reflection. And in total internal reflection, we observe that, or you can write that, light will completely reflect light will completely reflect when light ray is passing from when light ray is passing from dense to rare medium, right? तो जब डेंस टू रेयर मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो एक सर्टेन एंगल पर आकर लाइट जो है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस फिनोमिना को आप कहते हो कि लाइट जो है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई इन द सेम मीडियम, राइट? So if we discuss about the condition that how this is going to be possible for light, so there are some certain angles or certain terms you need to remember about that. So let's suppose if there is a medium or a dense medium, this is at one situation, and इससे पहले कभी आपको ये लगता था कि लाइट जो है वो completely रिफ्लेक्ट भी हो सकती है मीडियम में? No. ओके, लेकिन हम डेली लाइफ में अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी इतना उसे ऑब्जर्व नहीं किया होता डिटेल में, राइट? हालांकि इंटरनेट जो है हमारी बेसिक एक डेली लाइफ की एग्जांपल बन गई है अब तो। और आपने देखा होगा कि जब आप लैन केबल को कनेक्ट करते हो थ्रू पीसी और लैपटॉप, तो लाइट इज गोइंग टू बी ब्लिंक थ्रू द वायर, राइट? बिकॉज लाइट इज द फास्टेस्ट वेव विच ऑन आवर अर्थ सरफेस, तो उससे फास्टेस्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इंटरनेट को भी फास्ट ट्रैवल करवाने के लिए, डाटा को फास्ट मूव करवाने के लिए हम लाइट की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, राइट? Okay, so there are three diagrams and we are going to discuss about the angle, that at which angle light is going to be reflect through the dense to rare medium, right? So the first condition for total internal reflection is that light is going to be travel from dense to rare, right? तो पहली कंडीशन आपके पास ये है कि लाइट जो है वो आपके पास डेंस टू रेयर मीडियम ट्रैवल करे। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो हमारा लोअर एंड होगा वो डेंस मटेरियल है और जो अपर एंड है वो हमारा रेयर मीडियम है, राइट? As we already observe in the videos that light is always passing through the dense medium, right? So now if light is passing, अगर नॉर्मली किसी भी एंगल से लाइट पास हो रही है आपके पास थ्रू द डेंस मीडियम, तो उसकी डायरेक्शन हमें पता है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा ही होगा या टुवर्ड्स नॉर्मल होगा? Away from normal? Yes, away from normal. So this is our angle of incidence, and when light passes through that rare medium, so light will bend away from normal somewhere in this direction, right? So this is our angle of refraction. ये तो हमारी बेसिक एग्जांपल जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दो, राइट?
So after increasing the angle of incidence as compared to the previous one, तो यहाँ पर अगर हम एंगल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट डायग्राम के कंपैरिजन में ग्रेटर है, राइट? So now at this point, the refracted ray is at the angle of 90 degrees, right? मैंने रेड लाइन थोड़ा सा ब्लैक से ऊपर बनाया क्योंकि ब्लैक पे वो रेड लाइन विजिबल नहीं थी, लेकिन वो 90 डिग्रीज पर आपके पास लाइट बेंड हो जाएगी, राइट? जैसा हमने वीडियो में देखा था कि एक पॉइंट पर आकर लाइट जो है वो 90 डिग्रीज पर बेंड हो गई थी। क्लियर? Yes. अच्छा, अब यहाँ पर आपने एंगल्स को थोड़ा सा इनकी टर्म्स को याद रखना है। अगर मैं इनकी टर्म्स को यहाँ मेंशन कर दूं तो यहाँ पर जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब लाइट 90 डिग्रीज पर बेंड होगी तो उस कंडीशन में आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा विल बिकम क्रिटिकल एंगल। तो उस कंडीशन में जब लाइट 90 डिग्रीज पर बेंड हो रही है, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से मेंशन करोगे, राइट? तो नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम क्रिटिकल एंगल, राइट? है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पर आकर लाइट जो है वो 90 डिग्रीज पर बेंड होगी, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल से डिनोट करेंगे, राइट? ठीक है, एनी कंफ्यूजन? No. So angle of refraction will be equal to 90 degrees, and now angle of incidence will become our critical angle, right? And if you want to write for the first situation, so angle of incidence is less than critical angle, right? So अगर critical angle से incident angle अभी कम है तो आपके पास लाइट जो है वो नॉर्मली बेंड होगी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, राइट? मुश्किल तो नहीं है? Yes. और जब लाइट 90 डिग्रीज पर बेंड हो जाएगी, ठीक है, सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम क्रिटिकल एंगल, राइट? कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये 90 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, ऐसा नहीं होता। 90 डिग्री क्रिटिकल एंगल नहीं होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही आपके पास इस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल होगा, राइट? सो फर्स्ट सिचुएशन में इसलिए हमने लिखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, राइट? एंड फॉर द लास्ट डायग्राम, इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, राइट? अगर अब हम क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर कर दें इंसिडेंट एंगल को, so what will be the final effect? Can you identify? It will reflect. Yes, it will reflect. Very good. So in final situation, light is going to be reflect. And what will be the angle of reflection? Any idea? Equal to the angle of incidence. Angle of incidence के इक्वल होगा। वेरी गुड, बिकॉज हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है और वो सब जगह सेम अप्लाई होगा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, राइट? तो वेरी गुड, आपको ये चीज याद है तो ये आपको क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमें बताया नहीं था। ये चीज अंडरस्टूड है, हम पहले से ये चीज पढ़ के आए हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सो इन दिस सिचुएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर और लेस देन क्रिटिकल एंगल? ग्रेटर होगा या लेस होगा? Greater. It is greater than the critical angle, and now at this point light is going to be completely reflect into the same medium, right? उसने डेंस मीडियम से स्टार्ट किया और वो डेंस मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो गई। So that's why we say that this is the phenomena of total internal reflection, right? And if Yes. ask you about the condition for total internal reflection, so you need to remember two conditions for it.
because this is the specific condition for this phenomena. Without these conditions, this process is not possible. The first condition is light must travel from dense to rare or rare to dense. Dense to rare? Light must travel from dense to rare medium. And what will be the second condition? Critical angle must be greater than angle of incidence? Less than. Yes, very good. ठीक है, तो आपको एक बार में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, माशाल्लाह, वेरी गुड. सो सेकंड सिचुएशन वी कैन राइट दैट angle of incidence must be greater than the critical angle. Angle of incidence will be greater than critical angle, right? Yes. Critical angle. और ये क्रिटिकल एंगल मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है, ठीक है. जिस तरह अभी हमने वीडियो में देखा कि उस ग्लास ने अराउंड 40 डिग्रीज के अराउंड उसने लाइट को बेंड किया था, राइट. यहाँ पर जो है वो, हाँ, 40 के क्लोज उसने लाइट को 90 डिग्रीज पे बेंड किया. तो व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम? 40 डिग्रीज. ग्रेटर 40 या 41, 42. तो ये एंगल जो है वो वेरी करेगा मटेरियल टू मटेरियल, राइट. Yes. तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है. तो कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद 90 डिग्री क्रिटिकल है, ऐसा नहीं है आपके पास. ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करेगा और क्रिटिकल एंगल डिपेंड करेगा जब लाइट 90 डिग्रीज पर बेंड हो रही है, राइट. सो द सेकंड कंडीशन इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle, right? So these are the key terms and the conditions for total internal reflection. You need to remember about it, right?